जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल स्क्रीन में दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर द्वारा आपण माने हम बैच रे जॉइन करि परिबे। हमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। तो आसंतु स्टार्ट करनबा हमर मिडवाइफरी रो क्वेश्चन सब। A newborn baby with a heart rate of 120 beat per minute is considered। गोटे न्यूबॉर्न बेबीर हार्ट रेट 120 बीट पर मिनिट होइछि तो आमे ताको कौन कहवा ट्राकिकार्डिया ब्राडिकार्डिया नॉर्मल किंबा अबनॉर्मल। फास्ट देखिबा कि न्यूबॉर्न बेबीर हार्ट रेट रो रेंज केते 120 टू 160 तो एथरे कौन दिया है 120 तो ये नॉर्मल रेंज भितर जाउछि। ट्राकिकार्डिया केतेबेले कहवा जेतेबेले 160 बीट पर मिनिट ठारू अधिक हम सेतेबेले ट्राकिकार्डिया कहवा। ब्राडिकार्डिया केतेबेले कहवा जेतेबेले 100 बीट पर मिनिट ठारू बिलो हम सेतेबेले आमे ब्राडिकार्डिया कहवा। एक्सप्लेनेशन देखे नबा। ए नॉर्मल रेट फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी इन बिटवीन 120 to 160 beat per minute, therefore a heart rate of 120 beat per minute is considered within the normal range for a newborn. Tachycardia refer to a heart rate above 160 beat per minute in a newborn. Bradycardia refers below 100 beat per minute in a newborn. Hence, a heart rate of 120 beat per minute is considered perfectly normal for a newborn. Second question देखिबा। Which female reproductive organ provides space for embryo implantation and nutrition? तो फीमेल लो केउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टा एम्ब्रियो को इम्प्लांट कराए एवं परे ताको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराई थाए। ओभारी यूटरस भाजेना वेस्टिबुल बल्ब। तो यही चारिटा भितर केउंटी इम्प्लांट हुए और न्यूट्रिशन पाई थाए। तो फास्ट देखिबा ओभारी ओभारी तो ओभम रिलीज करे आउ हार्मोन रिलीज करे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। तापर यूटरस करे यूटरस कौन करे यूटरस इम्प्लांटेशन करे एवं परे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करि थाए। भाजेना एक्सटर्नल ऑर्गन थाए। वेस्टिबुलर वाल्व होची से भाजेनार गोटे ओपनिंग वाल। तो हम आंसर हेउची यूटरस। द यूटरस also known as the womb is a pear-shaped muscular organ located in the female pelvis. It is uniquely designed to provide a nutriting environment for a developing embryo and fetus. These are almond-shaped organs that produce egg and hormone like estrogen and progesterone. तो ओभारी कौन करे एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे आउ एग रिलीज करे। Vagina is a muscular canal that connects the uterus to the outside of the body. Vestibular valve. These are the two small masses of erectile tissue located on either side of the vaginal opening. तो एटा गोटे इरेक्टाइल टिश्यू माने जोडार इलास्टिसिटी थाए सेटा केउठारे थाए भाजिनाल रो ओपनिंग रे थाए दीटा वाल टाइप रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आगुरु भी आपण मानू कहिछि 55 तो यार डायमीटर भी जानि नियंतु यार डायमीटर होची 1 to 2 इंच इन डायमीटर। देखना भाई यार एक्सप्लेनेशन। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 55 cm about 22 inches with a normal diameter of 1 to 2 inch. However, there can be a normal physiological variation in the length of umbilical cord, with some being shorter or longer than the average due to the fetal movement and the genetic factor. तो यहाँ कम कि बेसी हो पारे केतेबेले हुए जेतेबेले फिटाल मूवमेंट अनुसार यह अफेक्ट करे कि जेनेटिक फैक्टर बापा माँ जीन कि वंशर जेनेटिक मैटर एटा अफेक्ट करे केते लंबा रहिबो कि केते चौड़ा ता भीतर डायमीटर केते रहिबो कि पिलार मूवमेंट अनुसार। देखिनबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बोन्स फ्रॉम द पेल्विस। तो पेल्विसटा केतेटा बोन को नहीं तैयारी 1 बोन 2 बोन 3 बोन और 4 बोन। तो केतेटा बोन को नहीं कि तैयारी फास्ट होची कि पेल्विसटा दुईटा बोन को नहीं कि तैयारी परे सेटा जतेबेले मैच्योर हो जाए से टोटल कंप्लीटली हिप बोन ने कन्वर्ट हुए। देखिनबा दुईटा बोन। द पेल्विस इज एनाटॉमिकली फॉर्म्ड बाय
two hip bones, one on right, one on left. Each hip bone itself developed from three separate components, ilium, ischium and pubis, which completely fuse together in adulthood to form a single solid hip bone. These two hip bones join anteriorly at the symphysis pubis and articulate posteriorly with the sacrum to form the complete pelvic ring structure. Therefore, although each individual hip bone has three development parts, the complete pelvis is structurally formed by two hip bones. तो हिप बोनटा दीटा बोन को लेकिन तैयारी एटा गोटे स्ट्रक्चरल राउंड टाइप रही थाए रिंग टाइप रही थाए तो तार आंटेरियर रे सिम्फासिस प्यूबिक्स पाखे जॉइंट होता है और पोस्टेरियर रे आर्टिकुलेट ऑफ सैक्रम पाखे से कनेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द प्लासेंटा स्टार्ट टू डेवलप. तो प्लासेंटा केउठारे डेवलप हुए, यूटरस, ओभारी, स्टोमक और फलोपियन ट्यूब. प्लासेंटा कौन? प्लासेंटा गोटे ऑर्गन जोटा कि बहुत हेल्प करे पिलार डेवलपमेंट पे कि कम्प्लीटली हेल्प करे जोटा कि यूटरस वाल रे लगी थाए एवं अन्य पार्टटी बेबी पाखरे लगी थाए जहाद्वारा ब्लड न्यूट्रिएंट आ एक्सक्रीटरी जहाँ भी बेबीर थाए ताहा मदर सहित एक्सचेंज हो थाए जोटा कि कम्प्लीटली पिला जेपर्यंत मैच्योर है कि पिला जेपर्यंत आउटर वर्ल्ड को आसीनी सी ताको बंचीबारे डेवलपमेंट करिबारे हेल्प करिथाए. तो यहाँ केउठी थाए, यूटरस रे, ओभारी रे, स्टोमक रे कि फलोपियन ट्यूब रे. यहाँ यूटरस रे थाए. A fetoscope is a specialized ausculting stethoscope designing specially to listen to the fetal heartbeat during the gestation. It allows the healthcare provider to monitor the fetus heart rate directly and access the fetal well-being. तो ऑटोस्कोप क्या कहवा, इनर ईयर कैनाल कि टिम्पानिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन करने जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज हुए ताको ऑटोस्कोप कहवा. ऑप्थालमोस्कोप कहवा जोटा कि इंटेरियर बा इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई को मेजर करने एग्जामिन करने व्यवहार करा जाए. स्पेशली रेटिना को पार्टोस्कोप से भाया किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप होई नहीं. देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल and the three hormone estrogen, progesterone and inhibin. फलोपियन ट्यूब, यूटरस, ओभारी कि भाजाना. क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल ये तीनोटी हार्मोन को डेवलप करिथाए किंबा रिलीज करिथाए. Ovaries are the almond shape organ located on either side of uterus. तो ये गोटे almond shape रो organ जोटा कि दुईटा थाए दीपट साइड यूटरस रे. They function as the primary female gonad and reproductive organ responsible for reproducing the reproductive cell and reproducing the hormone. एटा गोटे फीमेल गोनाड कहवा जोटा कि हेल्प करे एग रिलीज पाई किंबा हार्मोन रो प्रोड्यूस पाई. एस्ट्रोजेन रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन एंड बोन हेल्थ. प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूटेराइन लाइनिंग फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड रेगुलेट्स द साइकिल. इनहिबिन स्पेशली डाउन रेगुलेट the production of secretion of the follicle stimulating hormone from the anterior pituitary gland. तो तीनोटी जाक कौन कौन हेल्प करे, एस्ट्रोजेन टा हेल्प करे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट पे. सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जिते फीमेल ता अडल्टहुड को पाई थाए से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तार सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ भी डेवलप होता है, बोन हेल्थ भी डेवलप होता है. सेटा पाई एस्ट्रोजेन साहाଯ୍य करे. से प्रोजेस्टेरोन टा हेल्प करे प्रेगनेंसी मेंटेन पाई. प्रेगनेंसी मेंटेन केमिति हुए जितेबाला यूटरस लाइनिंग टा ठीक रे थाए, एम्ब्रियो ठीक रे डेवलपमेंट हुए सेतेबाला प्रेगनेंसी टा आमे बेटर प्रेगनेंसी कहबा. तो ताकू किए हेल्प करे, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करे.
इनहिबिन कौन करे से एफएचएस को रिलीज करने हेल्प करे एफएचएस को रिलीज किए करे anterior pituitary gland तो से anterior pituitary gland को एफएचएस रिलीज करिबारे सहाय्य करिथाए। What are the female external reproductive organ तो ये चारोटी जाक भितर केउंटी फीमेल एक्सटर्नाल पार्ट रे थाए फंडस यूटरस वेस्टिबल्स एंड सर्विक्स फंडलटा इंटरनल ऑर्गन यूटरस भी इंटरनल सर्विक्स भी इंटरनल वेस्टिबल्सटा होची एक्सटर्नल ऑर्गन। तो ये एक्सप्लेनेशन देखि नबा द फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कलेक्टिवली नोन एज vulva तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सटर्नल पार्ट को कम्प्लीटली आम vulva कहबा vulva अंतर्गत वेस्टिबुल्सटा गोटे vulvar पार्ट तो vulva रे कौन जाए लाबिया मेजोरा लाबिया माइनोरा क्लिटोरिस एंड vestibules the vestibules is a specific anatomical space situated within the labia minora that houses the opening of the urethra and the vaginal orifice along with the opening of Bartholin gland. It is play the key role in protecting the internal organ and facilitating the standard passage of urine and menstrual flow. Conversely, the fundus, uterus and cervix are classified as internal reproductive organ. तो वेस्टिबुल्सटा कौन करे द बार्थोलिन ग्लैंड रो ओपनिंग पॉइंट सेटा थाए आउ से कौन करे ना यूरिन आ मेंस्ट्रुअल फ्लो को से बेटर पैसेज प्रोवाइड करे आ ताको मेंटेन करी थाए। व्हाट इज अमिनोरिया तो काली आम मेंस्ट्रुअल साइकिल विषय जहाँ भी थिला पढ़ी थिले तो अमिनोरिया क्या कहवा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग scanty and infrequent menstrual flow menstrual bleeding that occurs daily absence of menstruation तो आम क्या कहवा अमिनोरिया absence of menstruation होची अमिनोरिया। Amenorrhea is defined as completely absence of menstruation in female of the reproductive age. It is clinically categorized into two primary form तो अमिनोरियाटा दुईटा भाग विभक्त कराई गोटे प्राइमरी गोटे सेकेंडरी अमिनोरिया डायग्नोस्ड व्हेन द यंग फीमेल हैज नेवर रीच मेनार्की हार्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड मेनार्की कौन तो फास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को मेनार्की कहवा फास्ट मेंस्ट्रुएशन को बाय द एज ऑफ 16 तो जिते बड़े गोटे अडल्ट फीमेल कि 16 एज रो फीमेल किंबा ता परे सीए जदि मेंस्ट्रुएशन होई न थाए आमे ताकू प्राइमरी अमिनोरिया कहबा से बरे सेकेंडरी अमिनोरिया कहा को कहबा when a woman who has previously established regular menstrual period misses 3 or more